Good morning, dear students. How are you all? Dear students, I have many objects. I have a pencil box. I have a pencil. I have an eraser. I have a door in front of me. अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ना I got to measure. मुझे इन सब की लेंथ देखनी है. How am I going to see it? अब it is a very difficult task. But no, it is not. Only because of this, we have to learn the measurement. So let's see कि हम लोग इन सारी चीज़ों की लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं. This is what we are going to learn today. And first of all, let's see what is length. Dear students, length is a type of measurement. It tells us how long or wide something is. Dear students, do you know length can be measured in the terms of meters, in the terms of centimeters, in the terms of kilometers. Dear students, I told you that we have to measure the length in meters, centimeters and kilometers. But how? You know, अगर तो two places के बीच का distance है, then we would be measuring it in the terms of kilometers. राइट क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है. अगर आप लोगों ने गंगानगर से यू हैव टू गो टू दिल्ली देन डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स. राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक यू हैव अ पेंसिल, यू हैव एन इरेजर, यू हैव योर कॉपी, हाउ टू मेजर द लेंथ? इसकी जो लेंथ होगी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की, जो आपकी हैंड में चीज़ें आ जाती हैं, वी वुड बी मेजरिंग इट इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स. किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर्स में. And dear students, if you have some bigger things with you, like there is a laptop, is that clear? There is a door in front of you. You have a cloth, mama's shawl is there. इनकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे? The length is measured in meters. How it is measured? In meters. So remember one thing, distance measured in kilometers. स्मॉलर थिंग्स की जो लेंथ होती है इट्स मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड थोड़ी बड़ी चीज़ों की लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू नो व्हेन वी हैव टू मेजर द लेंथ, हम लोग क्या चीज़ देखते हैं? एक तो हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, वी सी हाउ लॉन्गर इट इज़, हाउ शॉर्टर इट इज़, क्या ये चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है या नहीं है. वी ऑल्सो ट्राई टू एस्टिमेट द लॉन्गर एंड शॉर्टर थिंग्स. और इतना ही नहीं, हम लोग कई बार तो कंपेयर करते हैं. एंड इवन वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. राइट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी हमने हाइट देखनी है देन ऑल्सो वी कम टू नो हाउ टॉल और शॉर्ट अ पर्सन इज ड्यू टू द लेंथ. Now dear students, what are the tools for measuring the length? When I talk about the tools for measuring the length बच्चे, we have a ruler जिसको हम foot ruler भी बोलते हैं, we have a yardstick, we have a meter stick and we have a measuring tape. These are the modern tools. But आपको पता है कई बार length को हम लोग informal method से भी measure करते थे. But before that, let's see once again, length is measured with what? Length is measured with rulers, with meter sticks, yardsticks, measuring tapes, right? So बच्चे, अगर मुझे इस टेबल की लेंथ को चेकआउट करना है, मैं इस टेबल की लेंथ कैसे चेकआउट करूँगी? With the help of a measuring tape, because it is quite long, isn't it? Measuring tape का यूज़ करूँगी. आप रूलर को यूज़ नहीं करोगे, रूलर तो छोटा सा ही होता है. तो हम इसको किसको यूज़ करेंगे? We will be using a measuring tape. Now dear students, let's see some old techniques. आपको पता है हाउ इज लेंथ मेजर्ड इन द ओल्ड टेक्निक्स? इवन आपका जो फुट स्पैन है, फुट स्टेप भी बोलते हैं इसको, वी यूज इट टू मेजर द लेंथ. Even your hand span we use to measure the length, and even your arm length is measured to measure the length, right? इन तीनों चीज़ों को हम यूज़ करते थे old techniques के फॉर्म में to measure the length, right? One very important point, do remember, length is a longest side. Is that clear? The red sides show the length. See, the longest side of giraffe,
isn't it? And the longest side of a dog, both of them are different. So जो longest side होती है वहाँ पर हम length measure करते हैं. Now dear students, you know some more informal methods are there. अगर आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं या कुछ क्यूब्स हैं, उन क्यूब्स को देखकर हम लोग एक पेंसिल को मेजर कर सकते हैं. बट डू यू थिंक इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट? नो, स्टैंडर्ड यूनिट तो हमेशा मीटर्स और सेंटीमीटर्स ही रहेंगे या किलोमीटर्स रहेंगे. ये तो नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स हैं टू मेजर एनीथिंग. अब यहाँ पर हमने कितने क्यूब्स को यूज़ किए? प्लीज़ हरी अप एंड चेक इट आउट. 1 2 3 4 5 6 क्यूब्स. पेंसिल इज 6 क्यूब्स लॉन्ग. पेंसिल कितनी लॉन्ग है? 6 क्यूब्स लॉन्ग है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगेन रिमेंबर योर हैंड स्पैन, your foot span and your cubit and even your pace is used to measure the length. But ये non-standard units of length हैं. I hope this is clear. Let me clarify it more to you in my video. Now dear students, along with the help of a boy and mother, let's measure. Let's learn the measurement. Let's see what are the standard units of length? Uniform standard unit. You know that there are some non-standard units. So the boy had learned the non-standard units about length. Like we took up the cubes only to measure it. Like this is a paper pin to measure. But there are some standard units also with the help of which we can measure the length. Non-uniform, non-standard uniforms as well as uniform non-standard units do not give the exact measurement of objects. So we have to use the standard units. And the standard units that we use can be a ruler, it can be a measuring tape. Here we are going to learn how to use a ruler to measure. You know, a ruler is known as a scale. We also call the ruler as a scale. And there are small divisions, like 15 divisions on a small scale through which we can do the measurement. And this is expressed in centimeters. You also take out your ruler and just try to check it out. अगर आप रूलर को देखोगे तो यहाँ पे small divisions हैं, and with the help of these divisions we can easily check out the length. How many centimeters are there? 0 to 15 centimeters. Now what is centimeter? It is one of the uniform standard units to measure the length. मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है तो आप किस में मेजर करोगे? लेंथ के अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर. एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ द रूलर, स्मॉल एंड बिग वन. स्टूडेंट्स, टू मेजर हम लोग 0 सेंटीमीटर से लेंगे एंड वी वुड बी हैविंग हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 15 सेंटीमीटर्स. सो वी स्टार्ट फ्रॉम 0 till 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, and this goes on. So centimeters को हम किस में express करते हैं dear students? It is expressed in cm. Now dear students, let's see how is a boy going to measure the pencil with the help of a ruler. Let's see, it's going to be very interesting. You also do this practice. आपने एक pointed pencil लेनी है. Keep the point of the pencil on 0, right? कहाँ से start करना है? 0 से. And then we can easily measure it and see where is a pencil ending. It is ending on 14. So what is the length of a pencil? Length of a pencil is 14 centimeters. How many centimeters? 14 centimeters. You adopt. Now you can even check out with the eraser. Keep the tip of the eraser on the 0 mark and it is 4 centimeter. Isn't it very interesting? Yes, in fact. Now dear students, do you know one fact?
दैट जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं ना, उसको हम लोग सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. यू नो, वी हैव अ न्यू स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर देम. तो लॉन्गर यूनिट्स को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मीटर्स में. और इसको हम मेजरिंग टेप के साथ मेजर कर सकते हैं. रिमेंबर, measuring tape is used to measure the longer objects or even the distances. और मीटर्स को हम लोग m में एक्सप्रेस करते हैं. किस में एक्सप्रेस करते हैं? m में एक्सप्रेस करते हैं. वो यू नो, 1 meter is equal to 100 centimeters. Very interesting. 1 meter is equal to 100 centimeters. Very important. You should remember this. Now dear students, let's do some practice. अगर अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि 1 मीटर है तो 1 into 100 करोगे तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स आ जाएगा. How many centimeters? 100. Now dear students, one more example. 2 meters, how many centimeters? Very easy. क्या करना है आपको? Multiply 2 with 100. 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. 200 centimeters is the answer. I hope you are clear now. So dear students, do remember that if you have to measure the smaller things, then we use centimeters for that. And if we have to measure the longer things, the bigger ones, we use the meters as a standard measure. Now tomorrow we will do your foot span, hand span and the cubit and pace. Thank you.